Greetings everyone. Today we will be discussing worksheet number 3 of class 8 and I hope everybody has received their English book. This is your English book Honeydew textbook in English for class 8. उसका कवर पेज आपको कुछ ऐसा नजर आएगा. तो आज जो हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे that is from the same book. Let me show you the index also. This is the index and we are going to do chapter number 2, the tsunami. This is your geography lesson. So आपको इस बुक को फॉलो करना है for your worksheet number 3. This is your chapter number 2, the tsunami, and this is geography lesson. This is on page number 24. Now, what is tsunami? The first question that comes to our mind is, what is tsunami? This is how tsunami looks. As you can see on the left hand side, there are so many buildings, and on the right hand side you can see that water is coming out with full pressure. So any idea what is tsunami? Let us read the definition of tsunami. A tsunami is a long high sea wave that is caused by an earthquake or an eruption. Tsunami comes from a Japanese word meaning harbor and wave. तो सुनामी क्या होता है? एक लंबी वेव, एक बहुत ही लंबी वेव जो अर्थक्वेक की वजह से आई है या कोई इरप्शन हुआ है उसकी वजह से, उसको हम सुनामी कहते हैं. एंड दैट इज अ नेचुरल डिजास्टर. Let us understand the meaning of island because this word is important from the point of view of chapter 2. So what is an island? As you can see, island, there is a piece of land and it is surrounded by water from all the sides. See, look here. It is surrounded with the help of water from all the sides. This is an island. इसको द्वीप भी कहते हैं हिंदी में. एंड जब ये आइलैंड्स का ग्रुप होता है, सो दैट इज नोन एज आर्कीपेलागो. जब बहुत सारे आइलैंड्स हो, देयर इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, so we call it as archipelago. So these are some important terms which are important from the point of view of lesson number 2, tsunami. And you can see in the next slide, what is this? This is India's political map. India's political map where all the states, all the capitals, union territories, they are labeled. So see, look here, this is Tamil Nadu. We will be talking about Tamil Nadu in chapter number 2. So यहाँ पे तमिलनाडु होता है इंडिया के मैप पर. And then as you can see here, this side, this is Andaman and Nicobar Islands. Andaman and Nicobar Islands. So these two places are very important from the point of view of chapter number 2. Okay. Now let us discuss worksheet number 3. This is your worksheet number 3. Class 8, you will write the subject, you will write your roll number, you will write your name, and then you will write the name of the class teacher. And date is 12th April 2021. So this is part 1 of lesson Tsunami. Let us read part A. Look up the old news or discuss with your family and friends and write the names of a place or state where these natural disasters occurred in the past. Natural disasters का क्या मतलब होता है? जो naturally occur हो रहे हैं, ऐसे disasters जो naturally occur हो रहे हैं, हिंदी में हम इन्हें आपदा कहते हैं. And what is disaster? Sudden accident or a natural catastrophe that causes great damage or loss of life. कोई भी ऐसा सडन एक्सीडेंट जो नेचुरली हो रहा है और उसकी वजह से लाइफ को, प्रॉपर्टी को काफी हार्म पहुंच रहा है, एंड पीपल आर डाइंग, दे लॉस देयर लव्ड एंड लव पीपल, they lost their lives, they lost their property. So these are the repercussions of the natural disasters. तो हमें इन 4 पार्ट्स में ये बताना है कि जैसे अर्थक्वेक है तो वो पास्ट में कहाँ पे हुआ था.
So let us write here, write the answer. Now, as you know, 2020 में Delhi में कितने सारे earthquakes आए. So we can write Delhi here. Floods. For floods, we can write Telangana. Past में Telangana में flood आया. So we can write Telangana here. Then landslide. So we can write Uttarakhand here. Uttarakhand में landslide आया. And then cyclone. For cyclone, we can write Kerala. पास्ट में ही अभी रिसेंटली साइक्लोन आया था केरला में. सो दीज आर द आंसर्स फॉर पार्ट ए. Moving forward, in this lesson, you will read about another natural disaster. And what is that? T tsunami. On 26 December 2004. See, T tsunami लिखते हैं, but the pronunciation is tsunami. Okay, T is silent. On 26 December 2004, a tsunami hit parts of India such as Andaman and Nicobar Islands, जो मैंने अभी आपको इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे शो किया, and the Tamil Nadu coast and a few more countries. So they are saying कि 2004 में 26 दिसंबर को सुनामी की वजह से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में काफी डैमेज हुआ, तमिलनाडु में और बाकी और भी कुछ कंट्रीज थी जहां पे लॉस हुआ. So what is tsunami? The definition is given here. So you can learn the definition from here. A tsunami is a very large and powerful wave. बहुत ही बड़ी, बहुत ही huge and बहुत ही powerful wave होती है जो earthquake की वजह से होती है. Okay, earthquake की वजह से ये tsunami होता है under the sea. Let me just scroll it down and let us see the pictures. Look at it. Look at it. कैसे tsunami हो रहा है. People are floating. People are getting swept away. The car is also getting swept away in these waves, and houses are getting damaged. And then right hand side, you can see B part. Can you identify the places marked A and B on the given map? Hint, the places are mentioned in the above lines. So it is very clear. I'm just highlighting the answers in the above lines. So you can write down from here. The Andaman and Nicobar Islands. This is the answer. And one is the Tamil Nadu coast. Okay. So as I have already shown you in the Indian political map. So here this is Tamil Nadu. हम यहाँ पे Tamil Nadu mark कर लेंगे. Or this is Andaman and Nicobar Islands. So you can write down here and you can write the answers and write down part A and part B. So these are the answers for part B. Next, the tsunami caused huge destruction and loss of life and property. So this is merely the consequence of tsunami. क्या repercussions होते हैं, क्या results होते हैं. Tsunami की वजह से बहुत ज़्यादा destruction होता है, बहुत ज़्यादा loss हो जाता है, life को भी और property को भी. So here are some stories of courage and survival. अब नीचे कुछ stories given हैं and उन stories के through हमें पता चलेगा कि कुछ लोगों ने कितना करेज शो किया, कैसे लोग सरवाइव कर पाते हैं इन नेचुरल डिजास्टर्स में. सो दैट वी विल रीड इन द स्टोरीज व्हिच आर गिवन हियर. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द स्टोरीज. पेज नंबर 25 and 26. Please take it out in your book. Open your honeydew book. I hope everybody has opened their book. They are having one pencil. They are having a notebook as well to write the notes, to write the word meanings. So we have to start with page number 25 now. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Now I have already told you that what is the meaning of archipelago. That means a group of islands. Islands ka jhund. Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachil. His wife woke him up at 6 a.m. तो इग्नेशियस एक पर्सन का नाम है एंड वो कौन था. वो एक मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी का, राइट. एंड उसकी जो वाइफ थी वो उसको 6 बजे सुबह उठा देती थी. वाई? बिकॉज शी फेल्ट 6 बजे उसको उठा दिया बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक. 6 बजे उसको अर्ली इन द मॉर्निंग उठाया. क्यों? क्योंकि उसको लगा कि अर्थक्वेक आ रहा है. तो इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड. तो तुरंत इग्नेशियस ने क्या किया, जो टेलीविजन रखा हुआ था टेबल पे उसको नीचे ग्राउंड पे रख दिया ताकि वो नीचे गिरकर टूट ना जाए. क्योंकि हमें पता है कि ड्यूरिंग अर्थक्वेक शेकिंग होता है
and everything it starts shaking, सारा सामान नीचे गिरने लगता है, काफी ज्यादा लॉस हो जाता है जब चीजें टूट भी जाती हैं, so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. So this is the very best preventive measure while earthquake. जैसे ही आपको लगे कि earthquake आने वाला है तो हमें तुरंत अपनी बिल्डिंग से बाहर ओपन एरिया में निकल जाना चाहिए. When the tremors stopped, so what are tremors? That means shaking. I'm just highlighting the word. Yes. They saw the sea rising in the chaos and confusion. Chaos means जब सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड हो गया, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, चीजें इधर से उधर हो गई. Two of his children caught hold of the hands of their mother's father. Mother's father means जो हमारे नाना जी होते हैं, and mother's brother means जो हमारे मामा जी होते हैं, and rushed in the opposite direction. फिर वो वहां से तुरंत भागने लगे. He never saw them again. His wife also swept away. Wife भी जो थी वो पानी में ही बह गई. Only the three other children who came with him were saved. जो बाकी के 3 बच्चे थे सिर्फ वो ही बच पाए. Right? So this is one part of the story. Another story is of Sanjeev, who was a policeman serving in the Cashel Island of the Nicobar group of islands. He somehow managed to save himself, his wife, and his baby daughter from the waves. तो संजीव एक पुलिसमैन है एंड उसने अपने आप को भी बचाया, अपनी वाइफ को भी बचाया और अपनी जो डॉटर थी उसको भी वेव से बचा लिया. किसकी वेव से? सुनामी की वेव से. बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन. बट फिर उसको अचानक से आवाज आती है जॉन की वाइफ की. एंड जॉन कौन है? हु इज जॉन? द गेस्ट हाउस कुक. जो गेस्ट हाउस का कुक है उसकी वाइफ की आवाज आती है. संजीव jumped into the water to rescue her. So now I'm highlighting the word. Please write down its meaning. Rescue means to protect someone. Okay, किसी को बचाना. But they were both swept away. तो look at it. संजीव पानी में कूद गया बचाने के लिए जॉन को, जो कि गेस्ट हाउस कुक था. एंड क्या हुआ? दोनों में से कोई भी नहीं बच पाया. दे बोथ स्वेप्ट अवे. दोनों ही पानी में बह गए. सो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट. Next is 13-year-old Meghna was swept away. Now this is the third story, children. 13-year-old Meghna, वो 13 साल की लड़की थी, who was swept away along with her parents. अपने पेरेंट्स के साथ ही पानी में बह गई. And 77 other people. Look at the number of people. 77. She spent 2 days floating in the sea. 2 दिन तक तो वो पानी में ही फ्लोट करती रही, तैरती रही. होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर. एक वुडन डोर को होल्ड किया हुआ था. और आपको पता है ये वुड फ्लोट्स इन द वाटर. इट इज अ साइंटिफिक फैक्ट. 11 times she saw relief helicopters overhead. उसने 11 बार हेलीकॉप्टर को देखा. जो रिलीफ हेलीकॉप्टर आता है, जो ऐसे टाइम पे बचाने आता है, लोगों को रेस्क्यू करने आता है. बट दे डिड नॉट सी हर. बट हेलीकॉप्टर्स की नजर मेघना पर गई ही नहीं. शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव. पानी का जो फोर्स था, इतनी पावरफुल वेव्स थी कि वो शोर तक कैसे आई? waves के through. And was found walking on the seashore in a daze. So these are the stories which tells us कि कितना loss होता है life को, property को, and these all are the natural disasters because of which humans lose their lives and their near and dear ones. Now let us read question number C. This is the C part. Now complete the sentences with the help of the passage above. So number 1 is Meghna spent 2 days. तो मेघना ने 2 days कैसे spent किए? So write down the answer. It is given above. Floating. The answer is floating. 2 दिन तक वो float ही करती रही. Next is she saw dash dash overhead. So what did she see? Relief helicopter. We have already read it. Relief helicopters. Just ऊपर ही लिखा हुआ है. Yes. So this is the answer for first question. Part C. Second is Sanjeev lost his life but saved his dash. उसने अपनी लाइफ को तो गवा दिया, लेकिन उसने किसकी लाइफ को बचा लिया? Saved his wife, children. उसने अपनी वाइफ को बचा लिया था. And his
baby daughter. That is why two blanks are given. One is for baby and one is for daughter. Baby daughter को बचा लिया और अपनी वाइफ को बचा लिया, लेकिन जॉन को बचाने की वजह से या जॉन को बचाने के लिए जब उसने जंप किया तो अपनी लाइफ भी उसने खो दी और जॉन भी नहीं बच पाया. Number 3 is Ignatius could only save his dash children who came with him. This was the first story. So the answer is 3. वो अपने 3 बच्चों को ही बचा पाया जो उनके साथ आए थे. ठीक है, Ignatius के साथ. So these are the answers for part C. Next is part D. I hope you have written all these answers. Part D is, in your opinion, which words in the list below describe Sanjeev? Look up the dictionary for words that you are not sure of. Use words from the list to complete the sentence below. So there is a help box given and there are total 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 words are there. So they are saying कि अगर आपको किसी word का मतलब नहीं आता है तो आप dictionary से भी meaning search करके और फिर fill in the blanks कर सकते हैं. So cheerful is बहुत खुश रहने वाला. Brave means बहुत बहादुर. Careless means जो बिल्कुल भी care नहीं करता है, बहुत ही लापरवाह होता है. Heroic means जिसमें हीरो की क्वालिटीज होती हैं. ओके, समथिंग लाइक ब्रेव ओनली. सेल्फलेस मतलब जो सेल्फिश नहीं है, जो दूसरों के बारे में सोचे. और हार्टलेस मीन्स जिसके पास फीलिंग्स नहीं होती है, इमोशंस नहीं होते हैं एंड वो दूसरों की कोई केयर भी नहीं करता है. So let us read about Sanjeev. There is a sentence given related to Sanjeev. I think that he was very brave. So brave is already written, dash and dash. दो qualities और लिखनी है. So we can write two qualities from here. So now we know the meaning. So we can write heroic. Obviously वो heroic था. And one is selfless. अपनी परवाह नहीं की and jump कर गया water में. So these are the two qualities you can write. Last question is part E. Find out the past tense of the verbs in italics above, from the above passage and rewrite the phrases. An example has been done for you. So feel first is done for you, like feel changes into felt. Feel the earthquake, felt the earthquake. तो second form लिखने के बाद हमें पूरा phrase दोबारा लिखना है, right? So you can write down. This is very easy. See changes into saw the sea rising. बाकी हमें as it is copy करना है. Come changes into came. So came with him. Then next is here. So here changes into heard. Rest we will copy the same. Heard cries for help. Next is jump. We know jump changes into jumped. Jumped into the water. Then wake, wake is given. So wake changes into woke, woke him up. So these are the answers for part E. I hope you have understood this chapter till here. This is the first part of Tsunami. Remaining parts we will be doing in future. Please complete your work and send me as soon as possible. That is all for today. Thank you for watching. Take care. Bye.